Good morning students, welcome to online class. I hope you are fine. As you know that our previous chapter is completed, so today we are going to start our next chapter, which is chapter 11, geometry. So today in this video we will discuss about 2D shape and 3D shapes. 2D means two-dimensional shapes and 3D means three-dimensional shapes. So before starting that chapter you must know what is 2D shapes and 3D shapes. So let's start with the 2D shapes, means two-dimensional shapes. A two-dimensional shapes has only length and breadth but no thickness. जो आपकी 2D shapes होती है इसकी length होती है, breadth होती है, लेकिन उसमें thickness नहीं होती. This is also called plane shapes. 2D shapes is also called plane shapes. It can be drawn on a sheet of a paper, square, rectangle, circle, etc. are the example of two-dimensional shapes. ये आप जो प्लेन शेप्स होते हैं आप ये प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ 2D shapes are square, rectangle and circle. These are the examples of two-dimensional shapes. See next, which is 3D shapes. A three-dimensional shape has लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. जो आपकी 3 डायमेंशनल शेप्स होती है जिन्हें हम सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल 3D शेप्स एज सॉलिड शेप्स. ओके, उसमें आपकी लेंथ गिवन होती है, ब्रेथ गिवन होती है और हाइट गिवन होती है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. क्या ऑक्यूपाई करते हैं ये? स्पेस. ओके, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ 3D शेप्स आर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3D शेप्स. नाउ in this video we will discuss about the 3D shapes. The first one is, first of all we will discuss about the flat and curved surface. Flat surface क्या होती है और curved surface क्या होती है? जो आपके flat surface होता है that is made up from the plane figures. For example rectangle, square, triangle, जिनका सरफेस इस टाइप का होता है आपका प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके, दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस. ठीक है. और कर्व सरफेस आपके कौन से होते हैं? दैट आर मेड अप फ्रॉम द कर्व शेप. दैट इज आपका सर्कल शेप हो गया, ओवल हो गया, इस टाइप का अगर आपका सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड द कर्व सरफेस. ओके, सो इन 3D shapes we will discuss about the solid shapes, which is cuboid, cube, cone, cylinder and sphere. In cuboid number of faces are 6 and a cuboid has 12 edges and 8 vertices. Okay, cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. A cone has 2 faces, 1 edge and 1 vertex. Cylinder has 3 faces, 2 edge and 0 vertex, and sphere has 1 face, 0 edge and 0 vertex. So these are the faces, edges and vertices of the solid shapes. You have to learn all the faces, edges and vertices of 3D shapes. Okay, now we will discuss some properties related to these shapes. The first is cuboid. What is the property of cuboid? The opposite face of a cuboid are identical. क्यूबॉइड के जो अपोजिट फेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स इक्वल होते हैं. द अपोजिट एजेस ऑफ द क्यूबॉइड आर इक्वल. इसके जो एजेस होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? इक्वल. एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड इज बुक एंड इरेजर. नेक्स्ट इज क्यूब. ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर आइडेंटिकल. जो इसके फेसेस होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं एंड ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल. एग्जाम्पल्स आर चॉक बॉक्स एंड cubes. Next is cones. A cone has one circular edge, जिसमें आपका एक one circular edge होता है and it is triangle on the top. ऊपर से क्या होता है? इसका triangle होता है. It has one vertex. Okay, and the example of cone is birthday cap and ice cream cone. Next is cylinder. A cylinder has 2 curved faces which are identical. 2 curved face होते हैं जो आपके identical होते हैं and 2 circular edges. 2 circular edges होते हैं इसमें. Example cylinder, you can take a glass also. Okay, next is sphere. A sphere has one curve face. One curve face होता है, इसका कोई corner नहीं होता. It has no corner and no edges. An example of sphere are globe and football. Okay, now let's start with the first exercise of this chapter. The first is write the name of the following shapes in your notebook. Also write whether it is 2D or 3D shapes. आपको कुछ shapes given है, पिक्चर्स गिवन है, आपको ये बताना है, उनके नेम लिखने हैं और ये बताना है कि वो 2D शेप है या 3D शेप है. द फर्स्ट इज
This is a figure of cube and it is 3D shape. Next is a figure of cylinder. It is also a 3D shape. Next is a figure of rectangle. It is 2D shape या कि plain figure है. Next is cone. It is also 3D shapes. Next is sphere. It is 2D shape. Okay. Now question 2. Complete the following table. In this table you have to write down the number of faces, edges and vertices. You have to do this question by yourself. Now see question 3. Give an example of following shape from your surrounding. आपको examples लिखने हैं. Cone जिसकी कि अभी हमने डिस्कस किया था. Example of cone is birthday cap and ice cream cone. Sphere का globe and football. So in this way you have to complete question 3 also. Okay. So you have to complete all these exercise and you have to write all the definitions which we described in the video. So your homework is complete exercise 11.1 in your fair notebook. You have to write all the definitions also. Okay. So if you have any query you can ask in your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.